Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, cultures, and today is its 4th lecture. So my dear students, आज के lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के lecture में हम all the students will be able to describe the term interfaith harmony and how different minorities celebrate their festivals. ठीक है, आज हम different religions के बारे में पढ़ेंगे और कैसे जो है हमें उनके साथ at peace रहना चाहिए, हम ये भी discuss करेंगे. So the skills that will be developed in this lesson are recognition, understanding and analysis. So my dear students, now is time for an activity. अब मैं आपको different जो है signs दिखाऊंगी, different religious places दिखाऊंगी, डिफरेंट फेस्टिवल्स दिखाऊंगी. आपको गेस करना है कि ये किस किस रिलीजन के फेस्टिवल्स और उनकी रिलीजियस प्लेसेस हैं. सो फर्स्ट जस्ट लुक एट द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, टाओइज्म, शिंटो, जुडिज्म, सिखिज्म. तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो रिलीजन्स हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द जो है दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ क्विकली लुक एट द डिफरेंट फेस्टिवल्स और गेस करें कि ये कौन सा फेस्टिवल है. ईद, एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स. वेरी गुड. एंड दिस इज कलर्स एवरीवेयर. दिस इज होली एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज. वेरी गुड. और यहाँ पे आपको ढोल नजर आ रहा है और पगड़ियां नजर आ रही हैं, तो डेफिनेटली दीज आर सिख. And then comes the Christmas and it is celebrated by the Christians. Okay, my dear students, अब next pictures ज़रा देखें. अब आपको different religious places में दिखाने लगी हूँ and you have to guess ये किस किस religion की हैं. First you see a mosque. Yes, very good. Muslim. And then comes a church, a Buddhist temple. Then there is a temple, Hindu temple. Okay. Now अब आप देखें कि कैसे जो है डिफरेंट जो है रिलीजन्स जो हैं वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं. Here you can see a person offering namaz and he is a Muslim. Then you can see a scene in the church. ये Christians हैं. Then a person in front of idol, he is a Hindu. And then comes the Sikhism. सो माई डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं. ओके माई डियर स्टूडेंट, नाउ इज टाइम फॉर रिफ्रेशिंग योर नॉलेज. व्हाट इज योर रिलीजन? वेरी गुड. डू यू हैव एनी फ्रेंड हु बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजन? क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है? आई हैव अ फ्रेंड हु इज क्रिश्चियन बिकॉज आई एम मुस्लिम एंड शी इज क्रिश्चियन. So, but still we are very good friends. How should we behave with people of other religions? With respect, with care, because every human needs respect and care. Okay, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. There is no compulsion in religion. Truly, the right way has become clearly distinct from the error. So, my dear students, जो हमारा दीन है, अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहे हैं, हाँ, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है. ठीक है, और अल्लाह ताला ने सीधी राह को और गलत राह को एक दूसरे से बड़ी क्लियर वेज में जो है वो अलग अलग कर दिया है और अकल वाले जो है वो आराम से जो है वो उसको पहचान सकते हैं. सो दीन में किसी किस्म का जबर और ज़बरदस्ती नहीं है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर 25 इन योर बुक्स. I hope everybody has opened page number 25 in their books. Now quickly let's read interfaith in harmony. Interfaith harmony is a condition in which people of different religions respect each other's beliefs. They live with peace in a society with the people of other faiths. So my dear students, interfaith और harmony जो है एक ऐसी condition है जो कि तब होती है कि जब बहुत सारे रिलीजन्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सब जो है एक दूसरे के साथ हार्मनी यानी कि पीस के साथ पेश आएँ, एक दूसरे के बिलीव्स को जो है रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें. और इसी तरीके से जो है वो आप अपनी सोसाइटी में पीसफुल तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से रह सकते. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी. आज का लेसन बहुत ही शॉर्ट था.
लेकिन इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि चाहे कोई इंसान किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, आपको उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना है। सिमिलरली आपको उनकी रिलीजियस प्लेसेस जो हैं उनके साथ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना। ठीक है, सो द रैप अप ऑफ द लेसन इज द रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस along with their beliefs is called interfaith harmony। ठीक है, तो इंटरफेथ और हार्मनी जो है उसका क्या मतलब है कि आपको डिफरेंट जो रिलीजियस पीपल है अराउंड यू, यू मिस रिस्पेक्ट देयर रिलीजन एंड देयर फेथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज टाइम फॉर अ प्रैक्टिस वर्कशीट। ठीक है, you can simply download this worksheet from the description box below, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class at the top. Interfaith and harmony. Choose any religion and search about the following details to fill the given spaces. अब आपको किसी भी रिलीजन, मैंने आपको बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो स्टार्ट में दिखाए थे, आप कोई एक सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेलेक्ट क्रिश्चियनिटी। आप सबसे पहले जो है रिलीजन का नेम यहाँ लिखेंगे। Then which festivals they celebrate, like they celebrate Christmas, Easter. How do they pray? उनके pray करने का क्या तरीका है? They pray in their church. Draw religious symbol. आपको उनका religious symbol जो है वो draw करना है इस तरीके से। How should we behave with them? और आपको उनके साथ behavior कैसा होना चाहिए आपको वो भी लिखना है। We must be very respectful, peaceful and kind with other religions. So my dear students, now is time to note down your homework given on page number 26, research and analysis number 2. Ask students to look at their surroundings and identify a person of other religion. Ask them to discuss the religious similarities with them. Now the students who have discussed should share findings with the class. ठीक है, अब एक group of students जो है, या आप independently भी ये कर सकते हैं कि आपको कोई एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो कि आपके रिलीजन से ताल्लुक ना रखता हो। ही मस्ट बिलोंग टू सम अदर रिलीजन, और फिर आपने उससे पूछना है कि आपके और उनके रिलीजन में किस तरीके से सिमिलैरिटीज हैं। हाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन कीप्स देयर रिलीजियस प्लेसेस क्लीन, सो दिस इज अ सिमिलैरिटी। आप अपनी रिलीजियस प्लेसेस को क्लीन रखते हैं, आप अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे शोर नहीं करते, यू रिमेन क्वाइट। सो आप इस तरीके की सिमिलैरिटीज जो हैं वो सर्च आउट करें एंड देन डिस्कस इट विद योर क्लास, शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लास। नेक्स्ट होमवर्क इज गिवन ऑन पेज नंबर 32. What is interfaith and harmony? You have to write down the answer in your notebook. Then comes your announcement for next lecture. In next class, we will study that how different minorities celebrate their festivals. हमने आज different religions और उनके symbols को देखा, और हमने ये देखा कि हमें उनके साथ peacefully behave करना चाहिए, उनको respect करना चाहिए। Next lecture में हम उनके festivals जो हैं different, उनको देखेंगे और कैसे वो उन festivals को celebrate करते हैं। Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.